50% रेस्टोरेंट ऐसे होंगे जो बंद हो जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे उनमें से अक्सरियत अपने लोगों को नौकरियों से निकाल देगी या निकालना पड़ जाएगा। Have you ever thought that your favorite restaurant might not be able to survive this lockdown? Life was so different before the lockdown, and by and large, restaurants were and continue to be one of the biggest sources of entertainment, especially for a country like Pakistan, where entertainment opportunities are already very limited. This is a regular rush hour at this restaurant in Islamabad. Now, it paints the picture of a deserted place. There are more than 2 lakh restaurants in Pakistan, and an average small-scale restaurant has 20 direct employees. With all employees taken into account, this industry has a total of more than 10 million employees. With only a few restaurants open for delivery, sales are down by 80 to 90%. For the rest, it is a complete shutdown. बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है क्योंकि सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, कोई एक आधा रेस्टोरेंट खुला था उधर से ऑर्डर करते हैं और टिप भी बस कुछ नहीं बनती, बहुत कम हुआ है काम। The restaurant industry is not a standalone industry, but millions like Ahmed are dependent on restaurants for their livelihood. For example, food delivery businesses, meat, vegetable and grocery vendors to name a few. अभी ये कोरोना वायरस की वजह से ये रेस्टोरेंट हमारे बहुत सारे बंद हो, कारोबार पंजाब में बंद हो चुका है। तो ये जो लोग ये पहले मांग रहे थे ये लोग अभी भी मांग रहे हैं। ये हमारे जैसे जो लोग गरीब दिहाड़ी करके खा रहे थे ये अभी कारोबार बहुत से ज़्यादा बंद हो चुका है। ये जो लोग बड़े बड़े घर वाले हैं ये कह रहे हैं कि अभी भी मसलन काम बंद रखें। तो हम जिधर भी जाते हैं कारोबार कहीं भी नहीं मिलता, कारोबार बिल्कुल बंद है। हम क्या करें, हम किधर से खाएं? किराया बहुत ज़्यादा है। किराया मेन एक्सपेंस होता है हमारे रेस्टोरेंट का, दूसरा सैलरीज होती है, तीसरा फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड फिर टैक्सेस एंड एवरीथिंग। तो इतने मसाइल बढ़ गए हैं कि हमारे पास एक महीने की सैलरी है। मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट्स नहीं है और मोर देन 50% एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको ले ऑफ किया जाएगा। और जो मैं देख रहा हूँ अपने इस्लामाबाद इंडस्ट्री को, मोर देन 50% रेस्टोरेंट्स की कैपेसिटी नहीं होगी कि वो दोबारा इस लॉकडाउन के बाद रिवाइव कर सकें और अपने आप को दोबारा। तो आप ये कह रहे हैं 50% रेस्टोरेंट ऐसे होंगे जो बंद हो जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे उनमें से अक्सरियत अपने लोगों को नौकरियों से निकाल देगी या निकालना पड़ जाएगा। With the price hike of imported items, the decreasing purchasing power, and such high inflation, the restaurant industry saw one of its slowest sales in history in the past year. Small-scale restaurants are highly cash flow dependent and work from day to day. COVID-19 is the biggest existential crisis the restaurant industry has ever faced. Now, it is not a question of restaurants laying off their workers. It is a question of their very survival. Owners are worried about being forced to close down their doors permanently. And even when this is over, for many restaurants, it might not be as simple as unlocking their doors. The government and NGOs are taking commendable steps to ease the sufferings of underprivileged in this catastrophe. But if the restaurants close down and unemployment rises, how long will the government supply ration bags to all these people? No relief package or subsidy has been announced for restaurants yet. With such high utilities, rentals, salaries and taxes, how long will the restaurants survive?